हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएस के द्वारा 2023 में जो मेंस पेपर वन जो है पेपर वन उसको डिस्कस करेंगे हम। सो यूपीपीएससी एग्जामिनेशन मेंस तो 2023 और जीएस पेपर वन जो है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। टाइम अलाउड जो है ये 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स जो है ये 200 मार्क्स। और नोट क्या है यहाँ पे, तो 5 नोट्स दिए हुए हैं कि 20 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है जिनकी वर्ड लिमिट जो है 125 वर्ड्स, और सेक्शन बी जो है ये 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जिनकी वर्ड लिमिट जो है ये 200 वर्ड्स। द क्वेश्चंस आर प्रिंटेड इन इंग्लिश, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड by the question part is indicated against it, or keep the word limit indicated in the question in the mind. Any page or portion of the page left blank in the answer booklet must be clearly struck off. तो ये नोट दिए हुए थे जिसको हमको फॉलो करना है। तो सेक्शन ए जिसके अंदर 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन बी जिसमें 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर के बारे में हमको बताना है, उसके बारे में हमको लिखना है। तो गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। आंसर, वैदिक लिटरेचर क्या है? तो व्हाट आर द वेदास? वैदिक लिटरेचर ऑल्सो नोन एज द वेद refers to the ancient scriptures of Hinduism which are considered the oldest and the most authoritative text in Hindu philosophy and spirituality. तो वेद क्या है? तो वेद जो है ये वैदिक लिटरेचर जो है इनको ही वेद कहा जाता है, और ये हिंदुइज्म की एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं which are considered the oldest and the most authoritative texts in the Hindu philosophy and spirituality. Types of Vedic literature. वैदिक लिटरेचर जो है इनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है श्रुति और दूसरा है स्मृति। तो श्रुति जो बोला जा सकता है और स्मृति जिसको याद करते हैं। तो श्रुति मीन्स टू हियर। श्रुति मीन्स टू हियर। इट डिस्क्राइब्स द सेक्रेड टेक्स्ट विच डिस्क्राइब्स वेद। तो ब्राह्मण्स, अरण्यक एंड उपनिषद, तो वेदों को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं जो, और जिनको सुना जाता है श्रुति। तो दीज आर क्या बोल सकते हैं, श्रुति मीन्स टू हियर। इट डिस्क्राइब्स द सेक्रेड टेक्स्ट टू डिस्क्राइब वेद्स, ब्राह्मण्स, अरण्यक एंड उपनिषद। अब बात करेंगे स्मृति की। द टर्म स्मृति मीन्स टू बी रिमेम्बर्ड। स्मृति का मतलब होता है जिसको याद रखा जाए। इट इंक्लूड्स द पोस्ट वैदिक classical Sanskrit literature which consists of Vedang, Shad Darshan, Puran, Itihas, Upved, Tantra, Agam, Upang. The Vedic literature can be classified into the following categories. तो स्मृति जिनको याद रखना है, तो द टर्म स्मृति मीन्स टू बी रिमेम्बर्ड। इट इंक्लूड्स द पोस्ट वैदिक क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर्स, और ये कंसिस्ट करते हैं वेदांग, षड दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम, उपंग. The Vedic literature can be classified into the following categories. The four Veds includes the Rig Ved, Samved, Yajurved, Atharvaved, and their Samhitas. The Brahmans, the Aranyak, the Upanishads. So four Veds include Rig Ved, Samved, Yajurved and Atharvaved and their Samhitas. और ये संहितास क्या है? तो ये ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण्स क्या होते हैं? तो ब्राह्मण्स आर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ वेरियस सेरेमनीज। तो वेरियस सेरेमनीज का जो कंडक्ट होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। अरण्यक, these are the texts related to the forest life. Upanishads, these are also known as Vedant,
last chapter of Ved. The Upanishads are the last chapters, are known as the Vedant, the last chapters of Ved. They are the part of every Ved. They are parts of every Ved and deals with metaphysics. तो मेटाफिजिक्स और दर्शन से रिलेटेड जो शास्त्र है उसको ही उपनिषद कह रहे हैं, और इसको वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत। कंक्लूजन अपने आंसर का जो है हम देंगे, तो वैदिक लिटरेचर इज अ लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। तो वैदिक लिटरेचर जो है इज अ लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट which has been passed from one generation to the other। तो वैदिक लिटरेचर जो है ये लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पास ऑन होता जाता है या होता जाता था। It made an important contribution to in the development of the civilization and cultures। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसमें बताया गया कि वेद क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें बॉडी जो थी, और उसके बाद कंक्लूजन। अगला क्वेश्चन जो है कि अगला क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर में पूछा हुआ है 2023 में, राइट नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इन द मॉडर्न एजुकेशन। तो मॉडर्न एजुकेशन में सैयद अहमद खान के बारे में हमको नोट लिखना है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो सर सैयद अहमद खान was a prominent 19th century Muslim reformer, educator and social activists in the British India। तो सर सैयद अहमद खान जो है ये प्रोमिनेंट 19वीं शताब्दी में मुस्लिम रिफॉर्मर थे, एजुकेटर थे और सोशल एक्टिविस्ट थे ब्रिटिश भारत के अंदर। सैयद अहमद खान के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उसको हम एक एक करके देखेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला है कि प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन को इन्होंने अच्छे से प्रमोट किया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट जो है सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। प्रमोशन ऑफ रैशनल थिंकिंग्स, तो तार्किक बातों पे ये सोचते थे, तार्किक बातें जो थी उन पे ही चर्चा करते थे या उनको ही प्रमोट करने का काम करते थे। चौथा जो उनकी क्या बोलते क्वालिटी है वो एडवोकेसी फॉर द फीमेल एजुकेशन। और पांचवी जो उनकी क्वालिटी है ये पब्लिकेशन ऑफ द एजुकेशनल लिटरेचर। तो एक एक करके इन सभी को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सैयद अहमद खान पहला है प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। सैयद अहमद खान recognized the Western education in the modern world and advocated for its adoption among Muslims needed to embrace scientific and technical knowledge to progress and compete in the rapidly changing world। तो इनका ये कहना था कि वेस्टर्न जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और जो रूढ़िवादिता है उसको छोड़ना चाहिए, और मुसलमानों को ये साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज जो है ये क्या बोलते हैं सीखना चाहिए। अगला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। One of the most notable achievement of the Sayyid Ahmad Khan was the establishment of Muhammadan Anglo-Oriental College in Aligarh in 1875, which later evolved into the Aligarh Muslim University। Aligarh Muslim University was the first modern educational institution for Muslims in India। अगला जो है promotion of the rational thinking। Sayyid Ahmad Khan emphasizes the rational thinking, critical inquiry and the scientific reasoning in education। He encouraged the Muslims to engage with the modern knowledge and not to rely solely on the traditional learning। तो इनका बस यही है कि तार्किक शिक्षा जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए और जो चली आ रही रूढ़िवादिता है उसको दूर करना चाहिए। एडवोकेसी फॉर द फीमेल एजुकेशन। Sayyid Ahmad Khan was also a pioneer in the advocating for the education of the Muslim women। He established schools for girls and encouraged their participation in the modern education। पांचवा कंट्रीब्यूशन जो है कि एजुकेशनल लिटरेचर, पब्लिकेशन ऑफ द एजुकेशनल लिटरेचर, कहने का मतलब बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी थी। Sayyid Ahmad Khan wrote extensively
on the importance of the education and needs for educational reforms among Muslims, he published various books, pamphlets titled Ashbab e Bhagwat e Hind, Ashbab e Bhagwat e Hind, etc. Sayyid Ahmad, Sir Sayyid Aligarh Institute Gazette, a journal published by him, was an organ of scientific society. He founded the Scientific Society of Aligarh. He founded the Scientific Society of Aligarh to promote scientific education and research among Muslims. The society published journals and translated scientific works into Urdu, making scientific knowledge more accessible to the Urdu speaking population. अगर कंक्लूजन की बात करें सैयद अहमद के कंट्रीब्यूशन में, तो Sayyid Ahmad Khan's contribution to the modern education were groundbreaking and far-reaching. He played a crucial role in promoting the educational reforms, fostering a spirit of inquiry and rationalism, and empowering Muslims in India through education. तो मुस्लिम्स को एजुकेट करने का, उनको एम्पावर करने का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो सैयद अहमद खान को दिया जा सकता है. अगला क्वेश्चन जो है कि डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो अगला क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर्स में कि सरदार पटेल का रोल क्या है भारत के एकीकरण में इंडिपेंडेंस के बाद. तो भारत की आजादी के बाद जो सरदार पटेल हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के एकीकरण में. तो इसको हम देखते हैं. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑफन रिफर्ड टू एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. तो उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है. प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एज विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया. विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया, इन्होंने एक एकीकृत भारत का सपना देखा. Sardar Patel firmly believed in the idea of unified India. He recognized that the division of the country into numerous princely states could potentially weaken the fabric of the nation. His vision was to create cohesive and strong Indian union. दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. पहला क्या था? विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया. दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. After India gained independence in 1947, there were more than 500 princely states, each with the option to join either India or Pakistan or remain independent. Sardar Patel, as a deputy prime minister and home minister, skillfully negotiated with the rulers of these princely states to persuade them to accede to India. His persuasive abilities and diplomatic fineness were crucial in covering many of these states to join Indian Union. तीसरा जो उनका कंट्रीब्यूशन है ये इंटीग्रेशन थ्रू डिप्लोमेसी. सरदार पटेल employed a combination of diplomacy, negotiations, and in some cases coercion to integrate princely states. He assured the rulers of these states that joining India would be in their best interest, guaranteeing them autonomy and special privileges within the framework of Indian Constitution. चौथा है ऑपरेशन पोलो. तो ऑपरेशन पोलो जो है ये हैदराबाद के खिलाफ किया गया था. तो ऑपरेशन पोलो was one of the most notable work of Sardar Patel in integration of Hyderabad, the largest princely state in India. When Nizam of Hyderabad expressed reluctance to accede to India, Patel ordered the police action known as Operation Polo. This resulted in the swift annexation of Hyderabad to the Indian Union. ये 17 सितंबर 1948 को हुआ था. अगला है फोस्टरिंग यूनिटी. तो सरदार पटेल्स एफर्ट वेयर नॉट ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स
the rulers of the princely state, but also towards fostering unity among the diverse population of India. He worked tirelessly to promote the sense of nationalism and unity among the people, transcending regional linguistic and religious differences. अगला है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन यूनियन, तो उनको बोला जा सकता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन यूनियन. Sardar Patel's role in the integration of the princely states was so significant that he is often hailed as architect of Indian Union. His efforts laid the foundation of unified and strong India, which was crucial for nation's stability and progress in the post-independence era. His efforts laid the foundation for the unified and the strong India, which was crucial for the nation's stability and progress in the post-independence era. Conclusion की अगर हम बात करें तो in conclusion, Sardar Patel played an indispensable role in the unification of India after independence. His leadership, vision, and strategic approach were crucial in integrating the princely states and laying groundwork for united and the prosperous nation. तो सरदार पटेल जो है इन्होंने बहुत ही क्या बोल सकते हैं बड़ा रोल प्ले किया है भारत की यूनिफिकेशन में आज़ादी के बाद. इन हिज लीडरशिप, vision, and a strategic approach were crucial in integrating the princely states and laying groundwork for united and the prosperous nation. अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो क्षेत्रवाद की वजह से क्या हिंड्रेंसेस आते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में. भारत को डेवलप होने में क्या हिंड्रेंस क्रिएट करता है ये क्षेत्रवाद. तो रीजनलिज्म पहले देखेंगे हम कि रीजनलिज्म क्या होता है. तो रीजनलिज्म रिफर्स टू द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एम्फेसिस on the interest of a particular region or regions within a larger political entity such as a nation state. It involves the identification and promotion of unique characteristics, resources, and priorities of a specific geographic area. तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया के अंदर जो लोग होते हैं उनके हित इसमें निहित होते हैं. तो रीजनलिज्म refers to the political, economic, and cultural emphasis on the interest of a particular region or regions within a large political entity such as nation state. It involves the identification and promotion of unique characteristics, resources, and prioritizes the specific geographical areas. Regionalism in India can create several hindrances in the development of India, which are as follows. तो क्या क्या दिक्कतें जो है रीजनलिज्म की वजह से होता है. Fragmentation of resources. Regionalism can lead to the competition among the different regions for resources, hindering efficient allocation and utilization. तो क्षेत्रवाद की वजह से जो रिसोर्सेज है उसके एलोकेशन में दिक्कत आती है. This competition can sometimes result in conflict and hinder overall development efforts. Political instability. When regional interest overrides national priorities, it can lead to the political instability. Fragmented political agendas may impede the formulation and implementation of coherent national policies necessary for the development. Economic disparity. तो क्षेत्रवाद की वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी आता है. रीजनलिज्म कैन exacerbate economic disparities between regions, concentration of resources and development initiatives. Concentration of resources and development initiatives in certain regions can widen the gap between the developed and the underdeveloped areas, leading to the social unrest and hindered all overall economic growth. अगला जो नुकसान वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट.
Disparate regional interest can hinder infrastructural development initiatives. Lack of coordination and consensus among the regions can delay or stall infrastructure project crucial for the economic and the connectivity. Investment climate. Regionalism can create uncertainty in the investment climate. Investors may hesitate to commit resources to region marked by political or social tension, leading to reduced investment inflow and slower economic development. छठा पॉइंट जो है, छठा नुकसान ये है सोशल कोहेजन. रीजनलिज्म में अंडरमाइन सोशल कोहेजन एंड नेशनल इंटीग्रेशन. Social cohesion and national integration. When people identify more strongly with their region, then the national nation as a whole, it can weaken the sense of belonging and solidarity necessary for the collective progress. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी आते हैं. मैनेजिंग डाइवर्स रीजनल intersects with the federal system like India can pose administrative challenges. Conflicting policies and demands from different regions can strain administrative capacity and resources, hindering effective governance. Addressing these challenges requires concent- con- concentrated efforts. Addressing these challenges requires concentrated efforts to promote national unity, equitable development, and inclusive governance that considers the need and aspirations for all regions within India. अगला क्वेश्चन जो है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज फॉर द प्रिवलेंट पॉवर्टी इन इंडिया. कमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी, इज द ओनली कॉज ऑफ प्रिवलेंट पॉवर्टी इन इंडिया. कमेंट करना है, इसके ऊपर हमें बताना है कि बेरोजगारी जो है ये भारत के अंदर बेरोजगारी का कारण है. अनएम्प्लॉयमेंट इज अनडाउटली a significant factor contributing to the poverty in India, but it is not only cause. तो बिल्कुल सही बात है कि बेरोजगारी जो है ये भारत में गरीबी का कारण है, लेकिन भारत में गरीबी का कारण केवल बेरोजगारी ही नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. India's poverty is multifaceted and influenced by a range of economic, social, and political factors. Here are few reasons why poverty persists in India beyond just unemployment. Underemployment. तो पहला कारण है underemployment. Even when individuals are technically employed, they may not be able to secure jobs that provides adequate income or utilize their skills fully. This underutilization of human resources contributes to the poverty. Low wage and informal sector. So many Indians work in informal sector where wages are often low and job security is minimal. This contributes to the cycle of poverty and families struggle to make end the meet. अगला फैक्टर जो है क्या बोल सकते हैं गरीबी का, वो है लैक ऑफ एजुकेशन. तो लिमिटेड एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन रिजल्ट्स in the workforce that lack the necessary skill for higher paying jobs. Education is crucial for breaking the cycle of poverty by providing individuals and opportunities for better employment. अगली चीज है जेंडर इनइक्वालिटी. Women in India face significant barriers to the employment and often have limited access to education and resources. Gender discrimination in the workforce further exacerbates poverty, particularly in the rural areas. अगला कारण जो है ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज. लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर disproportionality affects the poor. This lack of infrastructure impedes economic development and perpetuates poverty.
Social inequality, caste based discrimination, as well as disparity based on religion, ethnicity, and geography, contributes to unequal access to resources and opportunities, ट्रैपिंग many in poverty. तो सोशल इनइक्वालिटी जो है, सामाजिक जो इनइक्वालिटी है, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज डिस्पैरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन, ethnicity, and geography contributes to the unequal access to resources and opportunities, trapping many in poverty. Ineffective social welfare program. तो जो भारत सरकार के द्वारा वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो भी कैसे हैं, इनइफेक्टिव है. तो वाइल इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस एंड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, their effectiveness is often hampered by corruption, inefficiency, and inadequate coverage, leaving many still in poverty. कंक्लूजन की बात करें तो एड्रेसिंग पॉवर्टी इन इंडिया रिक्वायर्स अ comprehensive approach that tackles these underlying causes, including strategies to create more jobs, improve education and skill training, address social inequalities, and strengthen social safety net. अगला क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट स्टेटमेंट with the statement that crime against women in India is increasing? तो crime against women in India is increasing. So do you agree with the statement that crime against women in India is increasing? So violence against women is a major public problem in the country. Recently, a steady increase is being seen in the number of crimes against women. The trend may vary depending on the various factors such as location, socioeconomic status, reporting mechanism. The perception of whether crime against women in India is increasing depending on the factors includes so reporting rates, legislative changes, media coverage, cultural and social factors. पहले ये चार फैक्टर्स देखते हैं कि द परसेप्शन ऑफ वेदर क्राइम against women in India is increasing depending on the following depending on the factors including reporting rates. So increase awareness and improved reporting mechanism may lead to more incidences being reported, giving the impression of an increase in crime against women. Legislative changes in law and regulation related to the crime against women, along with increased penalties for offenders, may lead to more cases being registered and reported. Media coverages. Heightened, heightened media coverage of incidents of violence against women can contribute to the perception of increasing crime rates, even if actual incidents remain relatively stable. Cultural and social factors. Deep seated cultural attitude and social norms may influence the prevalence and reporting of crimes against women, and changes in these attitude can impact perception of crime trends. While there have been instances where high profile cases and increased media attention have highlighted the issue, it's important it's important to analyze official crime statistics and data from reliable sources such as National Crime Record Bureau NCRB to gain a more accurate understanding of trend over time. कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इन कंक्लूजन, एड्रेसिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया रिक्वायर्स अ मल्टी फेस्ड अप्रोचेस that includes legal reforms, law enforcement measures, social awareness campaigns, and support services for survivors.
अगला क्वेश्चन, ओशंस आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, राइट अ शॉर्ट नोट। तो ओशंस जो है ये स्टोर हाउस है ऑफ रिसोर्सेज, राइट अ शॉर्ट नोट। So oceans are often referred to as the storehouses of resources due to the vast array of valuable resources they contain. Some of these resources include, तो पहला रिसोर्स क्या है, ये है फिशरीज, दूसरा है मिनरल्स, तीसरा है एनर्जी, चौथा है ट्रांसपोर्टेशन, पांचवा है बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, छठा और सातवां है मेडिकल रिसोर्सेज, आठवां है क्लाइमेट रेगुलेशन। तो एक एक करके देखते हैं। So, ocean are often referred to as the storehouse of resources due to the vast array of valuable resources. So, ocean provides major resource of food through fisheries, minerals. Deep sea mining has the potential to extract the valuable minerals such as manganese, nickel, copper, cobalt, are the rare earth metal elements from the earth floor. Energy. Ocean hold immense energy potential in the form of tidal energy, wave energy, and offshore wind energy. Harnessing these renewable energy sources can help reduce dependence on the fossil fuel and mitigating changes. अगला है ट्रांसपोर्टेशन। तो ओशन सर्व्स एज द वाइटल ट्रांसपोर्टेशन रूट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड with the majority of global trade being conducted. The oceans serve as the vital transportation route for the international trade, with the majority of global trade being conducted through maritime shipping. Ports and harbors located along the coastline facilitates the movement of between countries. Movement of goods between countries. अगली चीज है बायोडाइवर्सिटी। तो ओशन सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द मरीन लाइफ इंक्लूडिंग वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. These biodiversity is not only valuable for maintaining healthy marine ecosystem, but also provide potential for scientific researches, biotechnology, pharmaceutical discoveries. अगला इंपॉर्टेंट सोर्स जो है ओशन ये है टूरिज्म एंड रिक्रिएशन. तो कोस्टल एरियाज एंड मैरीन एनवायरनमेंट अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ईच ईयर बाय फॉर एक्टिविटीज सच एज वेकेशन, स्क्यूबा डाइविंग, snorkeling, surfing, and whale watching. Tourism generates revenue and supports local economies in the coastal regions. Medical resources. Marine organisms are a potential source of bioactive compounds with pharmaceutical application. Research on marine biotechnology has uncovered promising lead for the development of new drugs to treat various diseases. Climate regulation. Ocean plays an important role in regulating the Earth's climate by absorbing heat and carbon dioxide from the atmosphere. Hence, conclusion की अगर हम बात करें तो ocean stands as the boundless reservoir of resources, offering invaluable contribution to our well-being, prosperity, and the health of our planet. As steward of this precious resources, it is also our responsibility to protect and preserve it for generation to come. अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, सॉइल प्रोफाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, डू यू एग्री? तो सॉइल प्रोफाइल जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है in agriculture. Do you agree? Yes, I agree that the soil profile plays an important role in the agriculture. Soil profile refers to the vertical sequence of soil layer or horizon, each with its distinct characteristics such as texture, structure, composition, and depth. Soil profile is a vital in agriculture because of nutrient availability, दूसरा है वाटर रिटेंशन एंड ड्रेनेज, तीसरा है रूट डेवलपमेंट, चौथा है सॉइल स्ट्रक्चर एंड एरेशन, पांचवा है सॉइल पीएच एसिडिटी, छठा है सॉइल हेल्थ फर्टिलिटी. तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी,
So different layers of soil contains varying layers of essential nutrients required for plant growth. So different layers of soil contains varying levels of essential nutrients required for plant growth, such as nitrogen, phosphorus, potassium, and micronutrients. Understanding the distribution of nutrients within the soil profile allows farmers to implement appropriate facilitation strategies to optimize crop yield. Water retention and drainage. The soil profile affects water retention and drainage capabilities. Soil layers with different texture and structure can either retain or draw water at different rates. Proper management of soil profile helps to ensure adequate water supply for plant while preventing waterlogging or drought stress. अगला है रूट डेवलपमेंट. द डेप्थ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल होराइजन्स इन्फ्लुएंस रूट पेनिट्रेशन and development. Deep, well structured soil profiles facilitate robust root growth, enabling plant to access water and nutrient efficiently. चौथा फैक्टर जो है ये सॉइल स्ट्रक्चर एंड एरेशन. सॉइल स्ट्रक्चर विच is influenced by arrangement of soil particles, organic matter, and microbial activities, impacts soil aeration and root respiration. A well-structured soil profile promotes adequate oxygenation of roots and microbial population essential for healthy plant growth. Soil pH and acidity. Soil profile often exhibits variation in pH level across different horizons. Understanding these variations is crucial for selecting appropriate crops and implementing pH adjusting measures to maintain optimal soil condition for plant growth. Soil health and fertility. Soil profile serves as an indicator of overall soil health and fertility. Monitoring changes in soil horizons over the time helps farmer assess soil degradation, nutrient depletion, erosion, and other factors affecting agricultural productivity. In conclusion, soil profile plays indeed a vital role in agriculture as it influences fertility, nutrient availability, and soil and health of soil. अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थ्रो लाइट ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजी इन साउथ एशिया. तो रोहिंग्या मुसलमान जो है क्या बोल सकते हैं म्यांमार के, तो उनका जो रिफ्यूजी होना है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज इन साउथ एशिया. The Rohingya refugee crisis is a long-standing and the complex issue primarily affecting South Asia, particularly Myanmar and Bangladesh. The Rohingya people are an ethnic Muslim minority group primarily residing in Myanmar's Rakhine state. They have faced persecution and discrimination for decades, with these rights restricted and their citizenship denied under Myanmar's discriminatory policy. The crisis escalated dramatically in August 2017 when violence erupted in Rakhine State, driving hundreds of thousands of Rohingya people to flee across the borders into the Bangladesh. The United Nations described the situation as a textbook example of ethnic cleansing. Rohingya refugees have faced horrendous conditions, including violence, rapes, and other atrocities. Bangladesh have been primarily destination for Rohingya refugees fleeing from Myanmar due to its proximity and relatively open border policy. However, the influx of refugees has played a significant strain on Bangladesh resources and infrastructure, particularly in the Cox's Bazar district, where the refugee camps are located. The overcrowded and unsanitary conditions in these camps have raised concern about health,
sanitation, and spread of disease. In addition to the Bangladesh, Rohingya refugees have also sought asylum in other countries in the region, including Malaysia, Indonesia, Thailand. However, many of these countries have also faced challenges in providing adequate protection and supports to the Rohingyas refugees, often subjecting them to detention, exploitation, and other forms of abuses. Conclusion: the Rohingya refugees crisis remains a pressing humanitarian issue in South Asia, requiring continued attention and concentrated efforts from the international community to address the root cause of the crisis. So, the conclusion: the Rohingya refugee crisis remains a pressing humanitarian issue in South Asia, requiring continued attention and concentrated efforts from the international community to address the root cause of the crisis and ensure the protection and well being of the Rohingya refugee. Write a short note on the 9 number channel and its strategic importance. The 9 number channel, also known as the 9 dash line, refers to demarcation line used by People's Republic of China to assert its claim over the vast maritime territories in the South China Sea. It encompasses an area rich in natural resources, strategic sea lanes, and disputed territories, originally consisting of 9 dashes. It delineates China's historical claims over the most South China Sea. Strategically, the 9 number channel holds significant importance for several regions. पहला है मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, दूसरा है रिसोर्स रिचनेस, तीसरा है मिलिट्री प्रोजेक्शन. तो एक एक करके देखते हैं. तो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स. The South China Sea is one of the busiest maritime trade routes globally, with a significant portion of global trade passing through it. Control over this area allows for dominance in the international trade and commerce. तो चाइना जो है ये चाहता है डोमिनेंस वर्ल्ड ट्रेड में. रिसोर्स richness. This region, the South China Sea, is believed to hold the abundant oil and natural gas reserves as well as valuable fisheries. Control over these resources provide economic advantage and the energy security. Military projection. Control over the South China Sea allows for the projection of military power by establishing military installation and asserting sovereignty. China can extend its influence and control over nearby territories. Geopolitical influence. Geopolitical influence की अगर हम बात करें तो ownership of 9 number channel enhances China's geopolitical influence in this region. It allows China to assert itself as dominant power in the Southeast Asia and reinforces its status as a major player in the global affairs. Dispute resolution. The 9 number channel has been a focal point of the territorial dispute between China and several Southeast Asian nations, including Vietnam, the Philippines, the Malaysia, the Brunei. The strategic importance of these of the region makes this dispute significant, with the potential implication for regional stability and international relations. Conclusion की बात करें तो in conclusion, the 9 dash line holds immense strategic importance due to its role in maritime trade, access and to valuable resources, military projection capabilities, geopolitical influence, and ongoing territorial disputes. Control over these regions remains a key priority for China and other nations, and vested interest in South China Sea. तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हम लोगों ने देखा 2023 में जो मेंस का पेपर 1 के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे
उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेक्शन बी को देखेंगे, जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे 10। सेशन आपको फ्रूटफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।